Hello and welcome to the Student Based YouTube channel. In this session, we are going to discuss some important questions related to building material with the explanation which will be helpful for SSC JEE, State JEE, AE, ESE, GATE, PSUs and all one-day examinations. The explanation will be in Hindi and English, and the mode of the question will be in the English only. So the first question is, in a mortar the binding material is cement, sand, surkhi, clinker. So what is the correct answer? The correct answer is cement. Cement is the binding material in the mortar. मोर्टार में सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है. सैंड है जो बल्क प्रोवाइड कराता है. तो करेक्ट आंसर इसमें सीमेंट होगा. रोट आयरन कंटेन्स कार्बन अप टू. रोट आयरन में कार्बन का कंटेंट कितना होता है मैक्सिमम? 0.25%, 1.0%, 1.5%, 2%. Correct answer is 0.25%. In the wrought iron, the carbon percentage vary between 0.1 to the 0.25%. रोट आयरन में कार्बन का परसेंटेज 0.1% से लेकर 0.25% तक वेरी करता है. तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ए. अगर स्टील का क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टील में होता है 0.25 से 1.5%. If the question is asked about the steel, so the percentage of the carbon will be in between 0.25 to 1.5%. Ultimate strength to cement is provided by. सीमेंट को जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्राप्त होती है वो कौन से कंपाउंड से मिलती है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइड. So the correct answer is dicalcium silicate. Ultimate strength is provided with the help of the dicalcium silicate. Early strength is provided by tricalcium silicate C3S, but ultimate is provided by the compound C2S. तो सीमेंट को जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्राप्त होती है वो C2S से होती है और अर्ली स्ट्रेंथ है वो C3S से प्राप्त होती है. Move to the next question. In the cement, the compound quickest to react with water is. सीमेंट में कौन सा कंपाउंड है जो वाटर के साथ सबसे पहले क्रिया करता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट. करेक्ट आंसर इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट. सो इसका सही उत्तर है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट. ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैश सेटिंग. So sometime in examination it is asked that which compound is responsible for the flash set of cement. So the answer will be tricalcium aluminate. परीक्षा में अगर पूछा जाता है कि फ्लैश सेटिंग के लिए कौन सा कंपाउंड जिम्मेदार है तो उसमें उसका आंसर होगा ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A. नेक्स्ट क्वेश्चन. The clay to be used for manufacturing bricks for a large project is dug out and allowed to weather throughout the monsoon season, the winter, the summer, none of these. So we know that the weathering is done in the monsoon season. So बरसात का मौसम या मानसून का जो मौसम है उसमें अपन क्ले की जो है वेदरिंग के लिए उसको रखते हैं. पूरे मानसून सीजन में उसको रखते हैं ताकि उसकी अच्छे से वेदरिंग हो जाए.
The rock which are formed due to cooling of magma at a considerable depth from the earth's surface are called rocks। जो लावा के ठंडा होने से एक कंसिडरेबल डेप्थ पे फॉर्म होती है अर्थ सरफेस से, उन रॉक्स को क्या कहते हैं? वोल्केनिक, हाइपोबेसल, प्लूटोनिक एंड इग्नियस। तो हम जानते हैं कि ये ए, बी और सी तीनों ऑप्शन में जो रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक्स के ही टाइप हैं और उनकी डेप्थ के हिसाब से इनका नाम अलग अलग दिया गया है। So the correct answer is plutonic rock. The rocks, igneous rocks which are formed above the ground surface are called volcanic. The rock which are formed at small depth known as hyperbasal, and the rock which are formed at the considerable depth are plutonic rocks. Sandstone is metamorphic rock, sedimentary rock, igneous rock एंड वॉल्केनिक रॉक। जो बलुआ पत्थर है वो किस तरह का रॉक है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है। तो सैंडस्टोन जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है। पिक अप द हाइपोबेसल रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग: ग्रेनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट, ऑल ऑफ द अबव। We know the granite is example of the plutonic rock, plutonic is igneous rock, basalt is the example of the volcanic rock. So the correct answer is the dolerite. Dolerite is a hypobasal rock. It is a type of igneous rock. Depending on the chemical composition and mechanical properties, iron may be classified as cast iron, wrought iron, steel, all the above. So all of these three examples are the types of the iron. So the correct answer is the D. The main constituent of fly ash is aluminum oxide, silica, ferrous oxide, all of these. So all of these are the options which are the constituent of the fly ash. You just have to remember all these. Due to attack of dry rot, the timber cracks, shrinks, reduced to powder. None of these. So due to the dry rot, the timber converts into the powder form. And in the shrinkage is a type of defect in the timber which is formed due to the natural forces and causes like shakes, different shakes, cup shake, star shake, heart shake. So these are formed due to the shrinking, but the converging in the powder form is attack of the dry rot. So correct answer is C. The rocks formed by gradual deposition are called sedimentary, igneous, metamorphic, none of these. So sedimentary rocks are the rock formed due to the gradual deposition of material. Galvanizing means converting iron with a thin coat of tin, zinc, glass and coal tar. The correct answer is zinc. Applying zinc coating on the iron sheets and all is called the galvanizing. It is done so that we can avoid the corrosion to the iron sheets and all. For preparing porcelains, the clay should be sufficiently pure, of high degree of tenacity, of good plasticity, all the above. So porcelains are what? These are the sculptures we made, pottery products and all these are called the porcelain. पोर्सिलेशन क्या है कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन वगैरह हैं, शिल्प हैं जो बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं। उनको बनाने के लिए हम 1200 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक या सेल्सियस तक उनको हीट करते हैं। तो उनके लिए जो क्ले यूज़ की जाती है उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? वो प्योर होनी चाहिए, टेनेसिटी मीन्स वो हार्ड होनी चाहिए,
दृढ़ होनी चाहिए एंड उसकी प्लास्टिसिटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। गुड क्वालिटीज़ हैं। गुड क्वालिटी स्टोन मस्ट be durable, be free from clay, resist action of acids, all the above. So these are the qualities of a good quality stone. So all of these qualities a stone should have. Correct answer is the D. The commonly used color pigment in paints is amber, carbon black, iron oxide, all the above. जो पिगमेंट है ये तीनों टाइप के जो पिगमेंट है वो अपन यूज करते हैं पेंट्स में। For the manufacture of plywood, verniers are placed so that grains of adjacent verniers run at right angles, parallel, inclined at 45 degree, inclined at 60 degree. So we know that in the manufacturing of the plywood, verniers are placed at 90 degree angles with each other. By this process, we can increase the strength of the plywood in all the directions equally. So plywood have strength in parallelly and perpendicular, both all the directions same strength. So the correct answer is A. Quicklime or caustic lime is obtained by calcination of pure limestone, has great affinity to moisture, is amorphous, all of the above. So quicklime is obtained by calcination of the pure limestone, correct. Has great affinity to moisture, right answer, because quicklime easily react with the water. Is amorphous, right answer. So all of the above options are correct. Move to the next question. Chemically, marble is known as metamorphic, argillaceous, calcareous, and siliceous rock. So we know that marble is a calcareous rock. Marble is a calcareous rock. So can anyone of you tell me that what is the name of the marble rock? Means it is metamorphic, igneous, or sedimentary. What type of rock it is? So marble is a metamorphic rock. It is made from what? It is a metamorphic rock made from the limestone. Gypsum consists of H2S and CO2, CaSO4 and H2O, lime and H2, CO2 and calcium. So we know that formula of the gypsum is CaSO4 2 into H2O. So the answer 2 is the correct. And can you tell me the use of gypsum in cement? Gypsum increases the initial setting time. Gypsum increases initial setting time of the cement. फिलहाल के लिए बस इतना है। अगर आप सर्वे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और जल्द ही सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड वीडियो हमारा आने वाला है। So don't forget to subscribe and like this video. Please share this video in your all social media groups. Thanks. If you have any query and suggestion, please leave your comment in the comment box.